Dear students, today we are on the lecture number 18 on renewable power generation, that is wind turbine generators. That means what are the different types of generator used in the wind turbine generating systems. One of limiting factor in wind turbines lies in their generator technology. Traditionally there are three main types of wind turbine generators, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में WTGS बोलते हैं, विंड टर्बाइन जनरेटर्स, which can be considered for the various wind turbine systems. These are direct current DC, alternating current AC synchronous, and asynchronous, which is also called the induction. In principle, each can be run at fixed or variable speed. That speed is coming from the wind blades. Due to the fluctuating nature of wind power, it is advantageous to operate the wind turbine at a variable speed, which reduces the physical stress on the turbine blades and drive train, and which improves system aerodynamic efficiency and torque transient behavior. Come to the first, that is DC generator technologies. In conventional DC machines, the field is on the stator and the armature is on the rotor. The stator comprises a number of poles which are excited either by permanent magnet or by DC field windings. If the machine is electrically excited, it tends to follow the shunt bound DC generator concept. This particular DC wind generator, as shown in figure, here it is very clear that wind turbine blades are directly coupled with the DC generator, then controller, and then step up transformer, which is directly fed to grid or battery charger. Basically, wind turbine DC wind generator system consists of wind turbine, DC generator, and insulated gate bipolar transistor, which is treated as IGBT, inverter, a controller, a transformer, and a power grid through which the power is transmitted. For shunt bound DC generators, the field current and thus magnetic field increases with operational speed, while the actual speed of the wind turbine is determined by the balance between the wind turbine drive torque and the load torque. The rotor includes conductors wound on armature which are connected to a split slip ring commutator. Electrical power is extracted through brushes connecting the commutator, which is used to rectify the generated AC power into DC output, because as we all know that generation is always in AC and it has to be converted into DC by using the commutator. Clearly, they require regular maintenance and are relatively costly due to the use of commutator and brushes, because they are in the motion, so definitely maintenance is more. In general, these DC wind turbine generators are unusual in wind turbine applications except in low power demand situations, where the load is physically close to the wind turbine, that is directly coupled or within a very short distance. That means you are supplying a power directly to the load, or in heating applications or in battery charging. But basically this type of systems are not now in use. So we should go for the recent systems. Now, generating systems, the evaluation of wind power conversion technology has led to development of different types of wind turbines configuration that make use of variety of electrical generators. A classification of most common electric generators in large wind energy conversion system is as in figure. पिछली स्लाइड में मैंने जो आपको डीसी जनरेटिंग सिस्टम बताया था,
वो बहुत ही छोटे लोड्स के लिए होता है और कमर्शियल पावर प्लांट्स में उसको यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ इस स्लाइड में यू आर सीइंग वेरी क्लियरली द डिफरेंट जनरेटिंग सिस्टम्स, वेदर इट मे बी ए कमर्शियली और big power plants or a large power plants. That electric generator for large wind turbines is basically divided into two parts: induction generator and second is synchronous generator. In particular, induction generator, we come to the doubly fed induction generator, squirrel cage induction generator. In particularly doubly fed induction generator, it comes slip ring feed motor and brushless motor. When come to the synchronous generator side, it is also divided into two parts: wound rotor generator and permanent magnet generators. Now wound rotor generators are also classified into two types: slip ring feed motor rotor, brushless rotor. In particularly permanent magnet generators, there are also classified into two parts: inset magnets and surface mounted magnets. This is the basically classification of commonly used electric generators in large wind turbines. Now come to the different schemes available for the electrical power generation. First, constant speed constant frequency system, जिसको कि हम CSCF बोलते हैं. Second, variable speed constant frequency system, VSCF design. थर्ड, वेरिएबल स्पीड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, VSVF. यहाँ पर ये मैं आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, हमेशा 50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी इंडिया में है. एंड वट एवर द सिस्टम वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, इट शुड वर्क ऑन 50 हर्ट्ज ओनली. तो पहला जो बात आ रहा है कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब मशीन की जो आप ब्लेड्स हैं वो जो कपल्ड रहती हैं जनरेटर से, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे ही घूमती है और वो डायरेक्टली कपल्ड रहती है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम बोलते हैं उसको. वेरिएबल स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो ब्लेड की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो गियर के थ्रू जो कनेक्टेड रहती है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी. और थर्ड जो है वेरिएबल स्पीड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसमें स्पीड भी वेरी हो सकती है और हमारी फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो सकती है. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज CSCFS, constant speed constant frequency scheme. In this particular scheme we are going to use for large generator. That means this particular scheme is used for large generators that feed the generated power to the grid. Commonly synchronous generator or induction generators are used for power generation. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्कीम में विंड दिख रही है आपको, विंड एनर्जी, उसके बाद विंड टरबाइन, उसके बाद गियर सिस्टम कपलिंग, और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट हम उसको ग्रिड में सप्लाई दे रहे हैं. If the stator of an induction machine is connected to the power grid and if rotor is driven above synchronous speed ns, that is synchronous speed, the machine delivers a constant line frequency. This particular formula comes from the ns is equals to 120 f upon p. Now F is equals to PNS upon 120 power to the grid. The slip of the generator is between 0 and 0.05. The torque of the machine should not exceed maximum torque to prevent runaway. Compared to synchronous generator, induction generators are preferred because they are simpler, economical, easier to operate, control and maintain, and have no synchronization problem. However, capacitors have to be used to avoid reactive volt amperes burden on the grid.
सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आप समझते हैं ना कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के साथ हमको हमारे जनरेटिंग या जनरेटर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है, और दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। मैचिंग को ही हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। नाउ कम टू द चॉइस ऑफ जनरेटिंग। Wind turbine is a device which converts kinetic energy of the wind into electrical energy. Horizontal axis wind turbine is the most used wind turbine nowadays. Wind turbine is classified into two types. They are fixed speed wind turbines and variable speed wind turbines. Come to the first, that is fixed speed wind turbine. In this, the maximum efficiency is obtained at a particular speed only. That is, regardless of the wind speed, the rotor speed of the wind turbine is fixed and is determined by the gear ratio. Frequency of the system, supply grid and design of the generator. The device consists of an induction generator connected directly to the grid as shown in figure. यहाँ पर आप देखिए रोटर है, उसके बाद आपका गियर बॉक्स लगा है, फिर सिंक्रोनस केज इंडक्शन जनरेटर है, कंपनसेटिंग बैटरी, ग्रिड कनेक्टेड पॉइंट। या ये जो पर्टिकुलर फिगर देख रहे हैं आप, फिक्स्ड स्पीड विंड टर्बाइंस, मतलब इसमें स्पीड जो रहेगी आपकी फिक्स्ड ही रहेगी, वो डायरेक्टली कपल्ड है। एन इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर यूनिट along with capacitor bank is necessary for reducing reactive power consumption. Fixed speed turbines are being simple, reliable, cheap, robust and well proven, and the cost of electrical parts are also low. The disadvantages are limited power quality control and uncontrollable reactive power consumption, mechanical stresses due to fixed speed operation. Because यदि आपका विंड का स्पीड ज़्यादा है तो भी जो स्ट्रेस विंड पर टरबाइन पर पड़ेगा वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर सेट स्पीड पर ही है तो स्ट्रेस ज़्यादा भी रहेगा तो भी, लेकिन विंड टरबाइन उतनी ही स्पीड से घूमेगी, फिक्स्ड स्पीड से। All fluctuations in the wind speed are transmitted as a fluctuations in the mechanical torque, जैसा कि मैंने कहा, and then it causes fluctuations in the electrical power on the grid. In variable speed wind turbines, the maximum efficiency is obtained over a wide range of wind speeds. So this is all about the fixed speed wind turbines. Now come to the variable speed wind turbines. The electrical system designs of the variable speed wind turbines are more complicated as compared with the fixed speed wind turbines. It is equipped with an induction or a synchronous generator which connected to the grid through a power converter. The power converter is used to control the generator speed. The disadvantages of the fixed wind turbines are rectified in the variable speed wind turbine. The advantages are increased energy capture, improved power quality and reduced mechanical stress. क्योंकि जिस वेलोसिटी से ब्लेड्स पर विंड आएगी उसी के करस्पॉन्डिंगली हमारा टरबाइन का रोटेशन रहेगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो कम होता है। The cost of the equipment is high and the design structure is complex as compared to the constant speed wind turbines, which is basically here we can say that it is a disadvantage.
In this particular slide, you are going to see the variable speed wind turbine, and this variable speed wind turbine currently mostly used for the recent time. So currently used the most popular variable speed turbine as shown in figure. Here wind turbine, gearbox हो भी सकता है, नहीं भी, then generator, then control system, then filters, coupling transformer, utility grid. बेसिकली ये पीछे का सिस्टम पूरा वही रहता है, बस मेन जो कपलिंग और जनरेटर तक का जो फिगर्स रहते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं. सो दिस इज द फिगर यू आर सीइंग वेरिएबल स्पीड विंड टरबाइन. अब ये दो तरीके से तो हो सकते हैं. अब इसमें अपन कितने टाइप के जनरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैकेनिकल मोशन तो मिल गया है. नाउ वी हैव टू कपल्ड विद द जनरेटर. एनी टाइप्स ऑफ 3-phase जनरेटर्स कैन कनेक्ट टू विद अ विंड टर्बाइंस. Several different types of generator which are used in wind turbines are as follows. Asynchronous, जिसको अपन इंडक्शन जनरेटर भी बोलते हैं, और दूसरा सिंक्रोनस जनरेटर्स. Squirrel cage induction generators and wound rotor induction generators are comes under the asynchronous generator, that is induction generators. Wound rotor generators and permanent magnet generators are comes under the synchronous generators. तो बेसिकली इतने टाइप के जनरेटर्स को आप डायरेक्टली कपल्ड कर सकते हो टू प्रोड्यूस द पावर. नाउ कम टू द asynchronous generator, that is induction generator. Squirrel cage induction generator, the fixed speed concept is used in this type of wind turbine. In this configuration, the squirrel cage induction motor is directly connected to the wind through a transformer, as in figure. A capacitor bank is here for reactive power compensation, and soft starter is used for smooth grid connection. यहाँ पर आप देख रहे हो असिंक्रोनस जनरेटर का फिगर. ब्लेड्स है, ब्लेड डायरेक्टली कपल टू द गियर, गियर के बाद जनरेटर, देन सॉफ्ट स्टार्टर एंड देन कैपेसिटर बैंक, एंड डायरेक्टली थ्रू द ट्रांसफार्मर इट इज फीडेड टू द ग्रिड. अगला जो जनरेटर है वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर, WRIG. द वेरिएबल स्पीड कंसेप्ट इज यूज्ड इन दिस टाइप. In this type of turbine, wound rotor induction generator is directly connected to the grid as in figure. स्क्रीन पे आप देख रहे हो wound rotor induction generator. The variable rotor resistance is for controlling slip and power output of the generator. The soft starter used here for reduced inrush current and reactive power compensator is used to eliminate the reactive power demand. The speed range is limited, poor control of active and reactive power. The slip power is dissipated in the variable resistance as losses are the disadvantage of this configuration. Now come to the permanent magnet generator. The generator is connected to the grid by a full scale frequency converter. The frequency converter helps to control both the active and reactive power delivered by the generator to the grid. बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, फुल स्केल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा हुआ है बीच में और बाकी का blades हैं. Then it is directly coupled to the gear, then generator, and then full scale frequency converter through transformer supplied to the grid. This is basically the flow diagram for the permanent magnet
generator. Next is doubly feed induction generator. In order to satisfy the modern grid codes, the grid turbine system have the capability of reactive power support. Doubly feed induction generator based wind turbine systems have more advantages than the others. This type of wind turbine deliver power through the stator and the rotor of the generator. The reactive power can provided in two sides. Hence, use the term doubly. Reactive power can be supported either through grid side converter or through rotor side converter. The stator part of the turbine is directly connected to the grid and rotor is interfaced through a crowbar and a power converter. The voltage to the stator part is applied from the grid and the voltage to the rotor is induced by the power converter. The power is delivered from the rotor through the power converter to the grid if generator operates above synchronous speed. If the generator operates below synchronous speed, then the power is delivered from grid through power converter to the rotor. The power converter controls both the active and reactive power flow. The DC voltage of link capacitor is the link between the grid and doubly feed induction wind turbines by feeding the pulse width modules, that is PWM, to the converters. Crowbar is implemented between the generator and converter to prevent short circuit in the wind energy system. This may result in high current and high voltage. The RSC converter controls the flux of doubly feed induction generator wind turbine, which operates at the slip frequency that depends on the rotor speed of the generator. According to the maximum active and reactive power control capability of the converter, the power rating of RSC is determined. तो ये पर्टिकुलर जो मैंने स्लाइड्स निकाले हैं, ये डिफरेंट टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र किया है और बुक GD राय को भी रेफ़र किया है. यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें कि पहला आपने स्टार्ट किया था कि हमारे पास कौन कौन से स्कीम्स हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की. उसके बाद हमने ये देखा कि कितने टाइप के जनरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसको हमने बोला चॉइस ऑफ जनरेटिंग. फिक्स स्पीड टरबाइंस भी हो सकती हैं, वेरिएबल स्पीड टरबाइंस भी हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिक्स स्पीड में का ये मतलब रहता है कि जो विंड की वेलोसिटी कितनी भी हो, लेकिन आप जो ब्लेड्स को आप कपल्ड करके जनरेटर में लगा रहे हो वो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी. वेरिएबल स्पीड टरबाइंस होती हैं, फिर इसका हमने डिटेल्स देखा, फिक्स स्पीड टरबाइंस का, वेरिएबल स्पीड टरबाइंस का. और रिसेंटली या करेंटली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वेरिएबल स्पीड विंड टरबाइंस हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर जो कि यूज़ करते हैं विंड टरबाइन सिस्टम्स में, वो हमने देखा. बेसिकली सभी जगह जो जनरेटर्स होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो इंडक्शन टाइप के या सिंक्रोनस टाइप के. तो वो सारी चीज़ें देख ली हमने, इसमें कितने टाइप के जनरेटर्स हो सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर स्कीम्स, जनरेशन स्कीम्स देखी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर्स देखे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.